Today we are going to begin the next unit, and that is lasers. Very interesting, very easy, and very useful topic. Laser. Let me know whether am I audible to you all properly, and PPT is also visible. Yes, very good. Thank you, everyone. Now let us pay attention to what you are being taught. So let us go to the presentation mode. Lasers. So this is our third unit as per the syllabus. Okay. Now lasers, we will first discuss the characteristics and properties of lasers which make it so popular in so less span of time. Laser was a very recent discovery, some 50 years back, and very easily it got attention of all fields and all the applications and various things started developing with the help of lasers. Okay, so what make it remarkable? What make it different from the natural source of light that we are going to see? Laser is nothing but light. Now, acronym of laser we will see in the coming slide, but I know you all people must be knowing it. Do you know the acronym? Laser is an acronym. Acronym is there is a long sentence. The starting word of each, starting alphabet of each word is combined together, and that is made as an acronym. So, can you tell what is the acronym? What this laser stands for? Anyone? It may take a little longer to type it in the chat box, but you may try. What this laser stands for? Does anyone know? No one? Okay. So I will tell. It stands for light amplification by stimulated emission of radiation. It's a process, and that process yields this powerful light which is called laser. Okay, so why this laser is different from normal light, that we are going to see as their characteristics and properties. So let us see them one by one. The first characteristics, or I can say property of laser, is the laser is highly monochromatic. Monochromatic means very narrow line width. Now, mono means single, chrome means color, color means wavelength. So, when I say a wavelength is coming out as a source of light, suppose I am saying that a wavelength of red color of some 6000 Armstrong unit is coming out. Now, actually, not exact 6000 Armstrong unit comes out, but there is a spread of wavelength, a range of wavelength comes out, where 6000 is the maximum peak value, and plus minus maybe 100 200 can be the spread of wavelength. If I show it diagrammatically, it is something like this, that if I say 6000 Armstrong unit wavelength is coming out, so this peak will be at 6000, but also the wavelength of this side maybe some plus 100, and on this side, okay, so minus 100 plus 100. So it may have a range of wavelength from 5800 to maybe 6200, or likewise, okay, whatever is the spread of wavelength. So this spread makes the light not monochromatic. जितना ज़्यादा spread उतना light कम monochromatic होता है. Now if I talk about laser, laser is having this spread very small, ऑलमोस्ट 5 लैम्बडास 10 लैम्बडास इस तरह का स्प्रेड होता है. तो इफ आई एम सेइंग 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट वेवलेंथ laser is there, so it is from hardly 5995 to maybe 6005 armstrong unit. So plus minus 10 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 20 इतना सा ही उसका स्प्रेड होता है, विच इज़ वेरी शार्प. अ पीक इज़ वेरी शार्प एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लाइट पीक. सो दिस इज़ कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक. याद रखो, परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक कोई भी लाइट नहीं होता नेचर में.
If I'm saying that sodium vapor lamp is perfectly monochromatic, having 5893 Armstrong in it only, actually it does not emit only 5893. It emits 5893, 5890, 5896 kind of wavelength. But the spread is very less. 5893 के इधर प्लस इधर -3 +3 इतना स्प्रेड उस सोडियम वेपर लैम्प का हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड नियरली मोनोक्रोमेटिक. सो इन नेचर ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक या नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस होते हैं. परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक कोई नहीं होता. कोई भी लाइट एक ही वेवलेंथ बाहर नहीं निकालता. तो ये कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं बनेगा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का. इट विल बी ऑलवेज अ काइंड ऑफ दिस पीक. बस फ़र्क ये रहेगा कि नियरली मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस में ये पीक बहुत ही शार्प रहेगा, उसका स्प्रेड बहुत कम रहेगा, और नॉर्मल लाइट्स में ये स्प्रेड बड़ा रहेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? इफ़ आई एम ड्राइंग दिस फॉर वाइट लाइट तो ये स्प्रेड कैसा रहेगा? 3000 से शुरू होके सपोज 8000 तक. सो 5500 में मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम पीक आएगा सेंटर पे. तो इधर 3000, इधर 3000, या इस तरह से उसका कुछ तो भी स्प्रेड रहेगा. ओके. सो लेज़र लाइट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक, और आई कैन से नियरली मोनोक्रोमेटिक. ओके. Second property, laser light is highly coherent. Now, what do you mean by coherent? The waves which are going to come out of the laser light are all identical with each other. They share the same phase relationship with each other. Now, if you want to see this diagrammatically, it is something like this. This red color torch is a laser torch, and this yellow color torch is ordinary torch. So can you see the ordinary torch is sending the waves of different, I can say, phases. Okay. Sometimes the phase is smaller, sometimes larger, sometimes very larger. So this phase difference, or status difference, or maybe frequency difference is making this light incoherent. Okay. And this laser is sending all the waves properly in all together one phase, where the phase status is also maintained. So this is coherent beam of radiation. Okay. A wave can also be coherent or incoherent with itself. Like a wave was initially having same status, maintaining the phase, and suddenly the wave got changed. Then the wave itself can be coherent for some time and becomes incoherent for some time. Or we can compare two waves with each other for their coherency. Okay, so coherency can be with one wave of itself, or can be of multiple wave with them together. Okay, so laser light is highly coherent. Then third property, the laser light is highly collimated and directional. Now collimated and directional, so it's very simple. This, so if you want the laser pointer, then whatever is the beam at the time when it is emitted from the opening, same will be the size of the beam when it is going to fall somewhere. So that is, it is having very less beam spread. Okay, it is highly directional or correlated. Unlike torch, if you talk about torch, so torch कैसे होता है? It has a spread. यहाँ से लेके यहाँ तक spread होता है ना? When you go in some dark room, if you want to check out something in the dark room and you don't have light there, you take out torch with you. So what will happen? Then torch will get a spread of light over a particular area, and that area will be illuminated. Will you be taking laser pointer there with you in the dark room? अगर आपको डार्क रूम में जाना है कोई चीज़ ढूंढने के लिए जहाँ पे लाइट नहीं लगे हैं, तो आप अपने साथ लेज़र पॉइंटर लेके जाओगे क्या? नो. व्हाई? व्हाई नो? Yes, I want responses from everyone. Please wake up, come back in the class. Because it is highly pointed. It will not illuminate the complete area. It will only point at certain spot. Okay, the beam will be kind of a spot which is used for PowerPoint presentation, etc. Yes, the light will be bright. The light will be very bright, but it will be restricted to only very small beam size. जितना उसका अपर्चर है एट द टाइम ऑफ माउथ, उतना ही ये बीम स्पॉट करेगा. सो इट विल थ्रो एज अ स्पॉट and not as a complete illumination of the room. Okay, so that's why laser is highly directional. Now next property, laser is extremely powerful and intense. Laser light is very intense, very powerful, and that's why in many of the places where laser is used, there is a symbol called laser hazard.
ओके, लेज़र हज़ार्ड इस तरह का आपने कहीं पढ़ा होगा या सिंबल देखा होगा. सो लेज़र लाइट शुड नॉट बी टेकन डायरेक्टली इनटू आइज. इट मे कॉज परमानेंट डैमेज टू द रेटिना. ओके, जो सस्ते वाले लेज़र पॉइंटर भी आते हैं ना, पीपीटी को पॉइंट आउट करने वाले, वो कभी कभार हम मजाक में एक दूसरे की आंखों में डालते हैं. तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट उस रेटिना का उस एरिया को परमानेंटली डैमेज कर सकता है. इस इतना इंटेंसिटी होता है. ओके, यू मे डू द सिंपल थिंग. वो लेज़र पॉइंटर दीवार के ऊपर पॉइंट करो, उसको देखो 5 मिनट और फिर इधर उधर देखो. आपको हमेशा वो लेज़र पॉइंटर का इम्प्रेशन हमेशा आपकी आंखों के सामने दिखता रहेगा. So that is temporary impression of that light because it is highly intense. तो सोचो अगर वो डायरेक्टली मारते हो रेटिना के ऊपर तो वो परमानेंट इंप्रेशन कॉज कर सकता है ऑन दैट रेटिना. सो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड इंटेंस लाइट. इट इज़ इवन यूज टू डू द थिंग्स लाइक कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग. जैसे गैस कटर्स, गैस वेल्डर्स होते हैं, वैसे लेज़र से भी कटिंग वेल्डिंग किया जाता है. लेज़र कट डायमंड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. कुछ कुछ डायमंड्स, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ के, तो वो लेज़र की टेक्निक से कट किए जाते हैं. ओके, और लेज़र बहुत सारे ऑपरेशंस में भी यूज़ होते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंटेंस एंड पावरफुल एंड वेरी कोलिमेटेड. ओके, दे कैन ऑपरेट वेरी वेरी स्मॉल एरिया. And now highly tunable laser can be also made tunable means we can change the frequency of the laser as per our desire. Okay, if we have one laser then we can modify it and change it to the second form of laser. तो जैसे रेड कलर लेज़र से किसी और कलर लेज़र जैसे ऑरेंज कलर में उसको पहुंचाना, उसका फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज करना, ये सब भी हो सकता है. सो लेज़र इज़ हाईली ट्यूनेबल also. So this is the actual photograph of laser available in the physics lab. Okay, I have taken it in the dark room. So the complete beam is illuminated because of the dust particles present in the atmosphere. Otherwise you cannot see the laser. But now that dust particles are getting illuminated where the laser is being traveled. So this is helium neon gas laser, red in color, which is available in our lab. Okay. So have you understood the properties of laser? I have listed some 5 properties of laser with their diagrammatic representation. I hope you have noted it down. No doubt I will be sending you the PPT as well, but still. अच्छा, ट्यूनेबल मीन्स इफ़ आई वांट टू, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग सेंड करते हैं लाइट, है ना. तो ऑप्टिकल फाइबर में वो जो लाइट जाता है उसको उसमें हम इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं. वी कैन सेंड इंफॉर्मेशन बाय ट्यूनिंग दैट लाइट, मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं. So laser can also be used for modulating and sending through optical fiber as information. जैसे रेडियो वेव्स को हम एज इंफॉर्मेशन भेजते हैं. द कम्युनिकेशन विच आई एम मेकिंग फ्रॉम हियर at GHRC, which is being reached to you at your homes, is done through such kind of waves only. So these waves are tuned according to the information being sent. मेरे जो साउंड वेव्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस में. वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को मिक्स किया जाता है जो वेव्स के साथ वो जाने वाले हैं, मे बी रेडियो या माइक्रोवेव्स. ठीक है, एंड देन दोज आर सेंट. सो दैट इज़ ट्यूनेबिलिटी. तो आपको इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपकी वेव को मॉडिफाई करके भेजते आना चाहिए. सो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लाइट की जगह ज़्यादातर लेज़र यूज़ होता है. तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन अगर भेजते हो तो वो लेज़र को उस मॉडिफाइड इसमें मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में भेजा जाता है. दैट इज़ ट्यूनेबिलिटी. गॉट इट सिद्धिका? सो आई होप आप लोगों ने ये अटेंडेंस आती थी 5 पॉइंट नोट कर लिए होंगे. सो शैल वी मूव अहेड? Okay. Now depending upon these properties, we have certain applications of laser. So that we are going to discuss one by one applications of laser. Now applications are discussed in different fields like military, scientific, commercial, industrial, mechanical. So these are different fields, 5 fields in which I have divided the complete set of application. Okay. In examination also आपको इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा that what are the different fields in which the laser is used. Okay, so field wise you are supposed to write down the application. So and that will be easy also. So this tree diagram you can always take note of. So let us see the applications one by one. Military. Now military or defense applications of laser are like lidar. Lidar is what? Have you heard of radar, everyone? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रडार सुना होगा सब लोगों ने. रडार्स यूज़ होते हैं मोस्टली एयरपोर्ट्स पे या इसमें डिफेंस के जो ये होते हैं
एयर स्टेशंस वहाँ पे रडार्स लगे रहते हैं. दे आर यूज टू ट्रैक एनी unknown body in the sky. Okay, basically radars are used for the sky transport, so they need to keep the track of any sky transport being made in a particular area, maybe with permission or without permission, so they can track that one. So similar case, lidar, that is LASIK detection and ranging, can also be made. Okay, laser image detection and ranging can also be made. Okay, where the lasers can be sent, maybe invisible lasers like UV or ultraviolet lasers are sent in the atmosphere, and if they are not coming back, that means there is no obstacle. But if they are been hurdled or obstacled by some material, maybe some aircraft, maybe some helicopter, or maybe even some bird is coming in the way, then that rays come back or get reflected back, and that reflection is traced back as obstacle is there. So in this way the area is scanned. Got it, everyone? Now second is laser guided missile. Laser guided missile, very simple one. The laser pointer or the laser target hitting mechanism is done with the missile. गेम्स में आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने, आई होप पबजी फ्री फायर खेलते होंगे, वहाँ पे बहुत बार लेज़र पॉइंटर वाली गन्स रहती है. जहाँ कहीं भी गन शूटिंग वाला टारगेट हिटिंग वाला केस आता है, वहाँ पे वो छोटा सा पॉइंटर वहाँ पे दिखाता है टू मार्क आउट अवर टारगेट. So same thing, the missiles, big missiles are also having the laser guided things in which remote will guide that laser where to hit, and you can adjust the missile direction so that you can hit the target properly. Okay, so these are the military applications. Then scientific applications, there is a huge area in the scientific applications like spectroscopy. Spectroscopy is study of materials, like study of your sorry, the study of structures of various elements, etc. So how the atoms are arranged, how the molecules are arranged, so that is done with the help of spectroscopy. Okay, now when laser was not invented, it was done with the help of simple light. Okay, and it was invented by the Indian scientist Sir CV Raman. So that was Raman spectroscopy. But after the invention of laser, instead of light, now laser beams are used, and the results are more prominent and perfect to get the positions of atom, and hence the spectroscopy also got the name as laser spectroscopy. Okay. Now next field of scientific is nuclear fusion. Now nuclear fusion is the process in which two heavy nuclei are fused together to form rather more heavy nucleus. Okay, it's kind of nuclear opposite to fission. So nuclear fusion, if you want to fuse two different nuclei together, you need to supply with high energy so that they will melt up together or bring up together. So that is done with the help of laser. Astronomy, in measuring the distances of stars, in measuring their diameters, etc., lasers can be used since they can travel long distances. When laser was invented in some 1960s by Ali Jawan and his co-workers, it was exaggerated. It was one statement given by the scientist that laser, if you keep a mirror on the moon, if you send a laser beam from earth to the mirror on the moon, the same beam size, same intense beam will be reflected back and obtained on the earth. So although it was exaggeration, but many of the times it found to be true that laser can travel longer distances with same energy, same intensity, and same size of the beam as well. Okay. Then next is geology. The geology and seismology, almost the related branches. They study the earth crust, basically the waves which are traveled in the earth crust, that is seismology, like earthquake waves, etc. Seismograph पता होगा आपको, जो earth वाली जो disturbances की waves है वो calculate करता है. So that is also done with the help of laser. Then microscopy and imaging, very widely used phenomena of laser is microscopy and imaging. Now imaging means you are creating the images, okay, of very minute or very fine things. So that can be illuminated with the help of very pointed beams, and laser can be used there.
ओके, सो जो माइक्रोस्कोपी होती है अलग अलग तरह की, कॉन्फोकल, मल्टीफोकॉन, देन ऑप्टिकल और सुपर रिजोल्यूशन, ये सब माइक्रोस्कोपी में इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लाइट लेज़र लाइट यूज़ किया जाता है क्योंकि वो हाईली इंटेंस और फोकस होता है, ठीक है। Then next comes the very commercial applications of laser. Commercial means day to day life applications, like we human being where we are using laser. So you might have seen the laser, but you may not have recognized, yes, it is laser. Like simple example, the barcodes. It's in the supermarket, if you're going shopping, and while billing counter, the counter person will only scan the barcode with the help of a small machine in his hand that sends some red color line on the barcode. So that red color line is nothing but laser. So that laser will read the barcode. So barcode reader is a commercial application. Then the simple PPT pointers, laser pointers or laser shows, you might have seen if a concert is there, then there are big laser shows being thrown onto the atmosphere or environment, so that the person from very far distance can see, oh yes, there is some program going on or some concert is going on. So those are called laser shows. Then the remote sensing, many remote applications, remote operated devices can use some sort of lasers. Then creation of holograms, I told you in the previous, holograms are done with the help of interference, and that interference is created not with the help of normal light but many times with the help of lasers to get very sharp images. Then optical fiber communication, I told you, if you want to send the information through optical fiber, then light is used. Now after the discovery of laser, instead of normal light, lasers are used to send in optical fiber by in the form of some information, and this is the most secured way of information. So this kind of information transfer is also used in the defense mechanisms. Okay, then next, industrial applications of laser. So industrials are cutting, drilling, soldering, cladding, welding. These are all energy-based applications of laser where hot lasers are used. There are two forms of lasers, I can say, hot lasers and cold laser. Hot lasers are something which are having high energy. Cold lasers are something which are having very very less energy. Okay, so industrial applications are hot lasers basically. So जो cutting, diamond shaping में, drilling में वगैरह काम आता है. And last, very huge field where the laser is used is medical. और मेडिकल में ही लेज़र का जो इस्तेमाल है वो इतना अच्छे से यूज़ किया गया कि द सर्जरीज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर. द वेरी पॉपुलर थिंग इज़ द लेज़र ऑपरेशंस डन ऑफ आई, ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जरी जिनको कहा जाता है, आई सर्जरीज. सो दीज सर्जरीज यूज लेजर्स as their main utensil. Earlier, what used to happen, if you want to treat cataract, you need to have hospitalization for some 2 3 days. Then the eye will be opened completely using the scissors, and it will be cut down, and then the pus is removed. But nowadays, for simple LASIK removal of cataract, you don't have to even get admitted in the hospital. It is a matter of just 2 3 hours, okay, and using laser without even opening the eye, directly the pus can be removed from the high directional laser. So LASIK surgeries or even some spectacle removing surgeries, you might have seen, get rid of spectacle, permanent lens fixation. So these surgeries are done with the help of lasers. The lenses are permanently, I can say, welt on the eyeball, and you will get rid of your spectacle and you can see clearly without even them. So LASIK surgeries of eyes are very very famous. Then soft tissue surgery. Now what do you mean by soft tissue surgery? The surgery is to remove the unwanted cell growths like cancerous cells, tumors, some kinds of mole or wart. ओके, कॉस्मेटिक सर्जरीज में ये होता है जनरली कि किसी के चेहरे के ऊपर कोई भद्दा सा एकदम मोल है या वार्ट है, बहुत बड़ा सा निशान है, तो वो लेज़र की मदद से रिमूव किया जा सकता है विदाउट इवन डैमेजिंग द अदर पार्ट्स. ओके, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी कट और समथिंग. इट इज़ treated with the help of laser high directional light, and it is the tissues are burned up. So same thing happens with the laser operated like chemotherapies for cancer or tumors, etc. So that is called soft tissue surgery. Even for your information, I can tell you one more thing, that if you had some permanent tattoos made and if you don't want that tattoo anymore, then you can use the laser surgery to remove that tattoo.
Okay, so the upper superficial surgeries on the skin are mostly easy to do with the lasers because they are highly directional, highly intense, etc. And then endoscopy पता होगा सब लोगों को, through your mouth the esophagus canal, the camera is sent through the inside the stomach and intestine, etc., to see their inner parts, whether they are having some kind of ulcers or some unwanted growth or something. So that is that pipe is contains a small camera which can also have a small light, laser light mounted on that, so which will illuminate that area, and then that area can be imaged. So that laser induced endoscopy is also there. Then dermatology, in the treatment of skin, many dermatology is used. लेप्रोस्कोपी फॉर द ट्रीटमेंट, एक पुराने इसमें रोग हुआ करता था जिसमें स्किन के ऊपर अलग अलग काइंड ऑफ अनवांटेड डेड सेल्स वगैरह का कलेक्शन, सो दैट इज़ आल्सो ट्रीटेड विद हेल्प ऑफ लेजर. So medical field is the very vast field where the laser is used in many different ways. But beside that, there are very different fields in which lasers are used. I'm going to send you this slide, no doubt. PPT मैं आपको भेज दूंगी, पर फिर भी सब लोग ये एक बार देखो, नोट करके रखो, ठीक है? So kind of question may come in examination for maybe 2 marks, like write 4 properties of laser, and on that property how it is useful in different applications. So you can mention like which property makes out which application. Laser is highly directional, so this property is useful for laser operations. Okay, when you are operating eye, it is very delicate portion of your body, so you need to be very precise, you need to be very focused on the particular point, so surrounding area should not be damaged. So at that time lasers are much more easier to operate. Okay, so directionality gives to the operational application of laser, or pointedness gives to the guiding of the missiles or gun pointers in military, or laser pointer, laser beams used for PPT presentations. So उसका हर एक प्रॉपर्टी और उसका रिलेटेड एप्लीकेशन आप बता सकते हो. जैसे इंटेंसिटी वाला प्रॉपर्टी बता सकता है कि वो कटिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग में यूज़ होता है ना? तो इस तरह से देर आर वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस. So now let us come to the origin of laser. Now requirement of lasers. If I want to make laser, which is light amplification by stimulated emission of radiation, so I should have three processes. Okay, and these three processes are called three quantum processes. These are the processes when energy interacts with matter. Okay, laser is obtained from matter, maybe from solid, maybe from liquid, maybe from some gas. Laser can be created, and it can be created with the help of some energy interaction of matter. So you need to send some energy onto this matter, and then this matter will make out laser. So these three quantum processes are very important. I want you people to please note down in your copies, okay, the keywords, the key points. So the three processes are absorption, spontaneous emission, and stimulated emission. Now we will see the three processes one by one. These are very simple process, और अगर ये process समझ में आ गई तो laser समझ में आ गया. Laser कैसे बनता है ये तीन process से पता चलता है. So let us see them one by one. Now absorption process. So there is a process diagrammatically on your left hand side, and on right hand side the process is shown with the help of some GIF. This is GIF which is being run continuously. The GIF is of 5 seconds, but it is looped inside the presentation, so it will keep on running. Okay, so how is the process absorption? So initially all the atoms are in the ground state. So there are energy levels. Quantum mechanics ने हमको बताया कि energy is in the form of level, like E1 एक energy होती है, E2 एक energy होती है. Now number of atoms in energy level E1 are suppose N1, so we call it population of E1. N1 is number of atoms in energy level E1, so N1 is population of E1. N2 is population of E2. Now in normal situations एटम्स जो होते हैं वो हमारे जैसे ही अलाल होते हैं. जैसे हमको पसंद नहीं है ज़्यादा काम करना, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना, तो एटम को भी पसंद नहीं होता, और नॉर्मली सभी एटम्स क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में बैठे रहते हैं. सुस्त एटम सभी ग्राउंड स्टेट में बैठे रहेंगे कम से कम एनर्जी में. अब जैसे ही हम इसके ऊपर कोई दूसरा एनर्जी डालते हैं,
Like if I throw some photon having energy h nu over these atoms with the energy difference E2 minus E1. ओके, ये E2 माइनस E1 क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लेवल, तो इस लेवल से इस लेवल में जंप करना है तो उतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, E2 माइनस E1। जैसे स्टेप्स होता है, आप अगर स्टेयर केस के ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको आपका पैर उतना तो उठाना ही पड़ेगा जितना वो स्टेयर केस का हाइट है। तो ये जो फोटोन है विच इज़ गोइंग टू फॉल ऑन टू दिस लेवल, दिस फोटोन शुड हैव द एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1। अब ये इतना एनर्जी वाला फोटोन अगर ये एटम के ऊपर गिर रहा है, so what will happen, this atom will absorb that energy, and now this atom has more energy, so it will not stay in this poverty limit, so it will go in the middle class region, so ये atom अब jump करके ऊपर चला जाएगा। So this process is called absorption. This is upward jump. ओके, जंप दो तरीके के होते हैं लेवल्स में, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड जंप होता है जनरली एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो डाउनवर्ड जंप जंप होगा एमिशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रोसेस एब्सॉर्प्शन? क्या लिखोगे लाइन्स में? 3-4 लाइन लिखना है आपको। सो आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग ऑन द पीपीटी बिकॉज आई वांट यू टू राइट इट डाउन। क्या लिखोगे? व्हेन इनिशियली ऑल द एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट, suppose E1 is the ground state and E2 is excited state, then N1 is the population of ground state, N2 is the population of excited state, and obviously N1 is more and N2 is very very less. Sometimes N2 is also negligible, empty. Now when we throw some energy of difference E2 minus E1 exactly, which is equal to h nu value as per the Planck's equation. So this is a photon, suppose, so I am throwing a light onto these atoms. This is suppose any metal atoms which over I am throwing the light, then what will happen, this photon will be absorbed by one of the atom, so its energy will be absorbed actually, and the atom will have now more energy, so it will not stay in E1 क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया तो अभी वो E2 में जाके जंप करेगा। दिस अपवर्ड जंप इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। ओके, एंड इट इज़ ऑलवेज हैपेंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल फोटोन। सो ये एब्सॉर्प्शन को हमेशा स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन कहते हैं। स्टिमुलेटेड मीन्स विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड के अपोजिट होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑकरिंग बाय इट्स ओन, तो अगर खुद होके होता है तो स्पॉन्टेनियस, और विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट, फोर्सफुली जो होता है वो होता है स्टिमुलेटेड। जैसे आप लोग जो पढ़ाई करते हो, खुद होके अगर पढ़ाई कर ली तो वो स्पॉन्टेनियस स्टडी हो गई, पर आप लोग खुद होके तो पढ़ाई करते हो नहीं। जब टीचर चिल्लाता है अभी सीआई है, पढ़ो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ये वो, तो टीचर ने दिया हुआ ये स्टिमुलस, ट्रिगर आपको मजबूर करता है पढ़ने के लिए। सो दैट इज़ योर स्टिमुलेटेड स्टडी। ओके, सो खुद होके हो रहा है प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस, दूसरों की मदद से हो रहा है तो स्टिमुलेटेड। So this photon will stimulate this atom to jump over in the next level, and this is called stimulated absorption. Stimulated obvious है, बिना फोटोन के ये जंप नहीं करेगा अपने आप ऊपर, तो स्टिमुलेटेड वर्ड जनरली नहीं लिखते, डायरेक्टली सिर्फ एब्सॉर्प्शन लिखते हैं, पर एब्सॉर्प्शन हमेशा स्टिमुलेटेड होता है। समझ में आया? तो ये जीआईएफ भी वही दिखा रहा है। ये देखो, ये जो एटम है पहले ब्लैंक था, नीचे था, ये फोटोन आया, उसने एटम को एनर्जी दी और एटम ऊपर जाके बैठा। समझा? सो दिस इज एब्सॉर्प्शन। अब एब्सॉर्प्शन केमिकली कैसे लिखते हैं? सो केमिकली लिखा जाता है ए प्लस एच न्यू। ए is the atom in the normal level, plus h nu is the extra energy given to the atom, and then it becomes A star. A star means unstable atom, excited atom. Okay, now n12 is the notation used how many number of atoms will move from 1 to 2. It is not 12, huh? It is n12. So number of atoms moving from 1 to 2 depends upon कितने नंबर ऑफ एटम है n1, है ना। 100 है नीचे तो 200 तो ऊपर नहीं जाएंगे, 100 है तो 100 ही ऊपर जाएंगे। सो n12 बेसिकली डिपेंड्स अपॉन n1। देन क्यू मीन्स दिस एनर्जी, ये जो फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है इसकी एनर्जी को जनरली क्यू कहा जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी फॉलिंग। एंड डेल्टा टी इज़ द टाइम ऑफ द प्रोसेस। जितनी देर के लिए ये एनर्जी इसके ऊपर गिर रहा है उतनी देर के लिए ये प्रोसेस होता रहेगा। सो n12 depends upon n1 q delta t. So this is the equation. This equation is chemical representation of the process, and this equation is dependence equation कि कितने atom depend करेंगे ऊपर जाने के लिए, तो ये। So tell me, have you understood the process? Just respond everyone immediately.
एब्सॉर्प्शन प्रोसेस समझ में आया? ओके, सो कैसे लिखोगे प्रोसेस के बारे में? अगर लिखना है 4 लाइन्स में तो कैसे लिखोगे? व्हाट इज क्यू? क्यू इज द एनर्जी। दिस ई है ना, ई हमने यहाँ पे बोला है, पर एनर्जी को जनरली फॉर्मूला में क्यू दिखाया जाता है, ठीक है, फॉलोइंग एनर्जी। Okay, so how will you explain the process? Initially, the atoms are in the ground state. When some external photons or external energy having h nu value is thrown onto these atoms, the atoms will absorb that energy and will go to the excited state. This process is called absorption. And absorption is always stimulated absorption because it always requires external agency to happen. External energy मिलेगा तभी तो वो ऊपर जंप करेगा, खुद होके तो जंप नहीं करेगा, समझा? So this is the first quantum process. ठीक है? Shall we move ahead for the next quantum process? Now next quantum process is emission. अब emission दो तरह के होते हैं, spontaneous emission और stimulated emission. मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको spontaneous और stimulated दोनों का मतलब बताया था. चलो बताओ तो spontaneous मतलब क्या? Spontaneous means, come on everyone respond. Are you sleeping? By itself. Very good, Kashat. Anyone else? Spontaneous means self dependent. Yes. No, not sudden. Spontaneous means of its own. Okay. Spontaneous here, spontaneity is not regarding time. Spontaneous is by its own. Okay, without any external help. Yes, without any need of external energy. Very good, everyone. So, spontaneous, don't consider spontaneous as sudden. That spontaneous with respect to time is different. Here, spontaneous means by its own, without any help of external energy. Okay. And what even by stimulated then? Stimulated means stimulated, triggered. Okay, very good. Any other thing? Stimulated means with the help of external energy, with the help of some external agent. Okay, it's forcefully. If someone is making it to happen, so that is stimulated. Yes, very good. So now emissions are of two kinds. एक होता है spontaneous emission और दूसरा है stimulated emission. तो spontaneous emission देखेंगे हम लोग पहले. Now suppose the atoms are in the excited state. Now excited states are highly unstable. Atom cannot stay in the excited state for long time. ये हमने एक लॉ में देखा था. याद है कि आप लोगों को कौन सा लॉ था जो ये बताता है कि एनर्जी ज़्यादा तो टाइम कम और एनर्जी कम तो टाइम ज़्यादा? विच लॉ टेल्स दिस? We have studied one law or one principle in the previous classes, in the previous unit, जो एनर्जी टाइम का रिलेशन बताता है कि एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम होनी ही है. तो इससे पता चल जाता है कि एक्साइटेड स्टेट आर हाईली अनस्टेबल एंड एटम कैन नॉट स्टे इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम. Which is that relation? Do you remember? Anyone? No, not conservation of energy. Priyanshu. Anyone else? याद है कि आप लोगों को हम लोगों ने वो प्रिंसिपल पढ़ा है जो बताता है एनर्जी और टाइम का रिलेशन. Heisenberg's, very good Prathamesh. It is Heisenberg's uncertainty. Yes, Siddhika. Heisenberg's uncertainty principle, that is delta E into delta T is ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस, मीन्स इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. तो अगर एनर्जी ज़्यादा तो टाइम कम, टाइम ज़्यादा तो एनर्जी कम. सो क्या होगा व्हेन द एटम्स आर इन द एक्साइटेड स्टेट? अब एब्सॉर्प्शन प्रोसेस हो चुका है, सपोज करो, ठीक है. एमिशन तभी होगा जब एब्सॉर्प्शन होगा. तो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद ऑल द एटम्स आर सपोज इन द एक्साइटेड स्टेट. ओके, दीज एटम्स आर इन द एक्साइटेड स्टेट. नाउ एक्साइटेड स्टेट इज हाईली अनस्टेबल and hence the atom cannot stay there for long time, and within a small time like 10 raised to power minus 8 to minus 9 second, these atoms will jump back to the ground state by their own.
बिकॉज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एटम इज टू गेट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. हमारा भी नेचुरल टेंडेंसी वही होता है ना, कम से कम एनर्जी खर्च करो. हमको पसंद है क्या दौड़ना भागना ज़्यादा मेहनत करना? नहीं, हमको पसंद है अपने सोफे में मस्त घुस घुस के टीवी देखना आराम से, ज़्यादा मेहनत ना करते हुए. इसलिए हम लोगों ने रिमोट विमोट भी ईजाद किए ताकि बैठे बैठे हम कमांड दे सकें. सो वैसे ही हमारे एटम्स में वो अलाली होती है, दैट एटम ट्राई टू बी इन द लीस्ट पॉसिबल एनर्जी एज सुन एज पॉसिबल. So what will happen? The atom in the excited state becomes highly unstable and immediately it will jump down to the ground state. पर वो जंप करेगा तो उसने जो एक्स्ट्रा का एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, E2 इज हैविंग हाई एनर्जी, E1 इज हैविंग लो एनर्जी. सो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विच इट हैज़ एब्जॉर्ब विल emitted out, and that energy is emitted out in the form of light, so we are able to see light. और वो उतना ही रहेगा एग्जैक्टली जितना उसने एब्जॉर्ब किया था. सो E2 माइनस E1 का डिफरेंस एब्जॉर्ब किया था तो उतना ही वो एमिट करेगा, एंड देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमिशन बिकॉज द एनर्जी इज emitted out, and this process is a downward jump. Understood everyone? The process is a spontaneous downward jump and it is called emission, where the energy is emitted, okay, and this emitted energy is having the same value as that of the energy difference of the two levels E2 and E1. Understood? So this GIF is depicting the same thing. ये देखो ये atoms ऊपर है, ठीक है. Let the GIF start again. These atoms are on upside, they emit the energy and they are jumping down. So this is spontaneous emission. अब spontaneous emission को chemical reaction के तौर पे कैसे दिखाएंगे? A star is the initial energy. ठीक है, A star means initial atom. Atom कहाँ पे है? Excited state में, तो उसको हम दिखाएंगे star, A star. Then it will give out A normal atom, ये नीचे आ गया atom, प्लस इसने क्या बाहर फेंका? H न्यू. सो A प्लस H न्यू. सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही है. सो A स्टार इज इक्वल टू A प्लस H न्यू. दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन. अब कितने एटम्स जंप करेंगे स्पॉन्टेनियसली नीचे? तो N21, ठीक है. अब ये 2 से लेके 1 में जंप हो रहा है. सो N21 नंबर ऑफ एटम्स जंपिंग फ्रॉम एनर्जी लेवल 2 टू एनर्जी लेवल 1, दैट इज बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन. तो वो डिपेंड करेंगे कितने एटम्स हैं. सो इफ N2 एटम्स आर देयर देन N2 एटम्स कैन कम डाउन, है ना. फिर से वही बात हो गई कि 100 एटम ऊपर है तो 200 तो नीचे नहीं आएंगे, 100 ऊपर है तो 100 ही नीचे आएंगे. सो N21 बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन डिपेंड्स अपॉन N2 एंड डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द टाइम अप टू विच द N2 एटम्स आर देयर इन द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. अब यहाँ पे Q नहीं है. क्यों नहीं है? क्यू नहीं है. क्यू, सो क्यू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है ना. हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी नहीं डाला है, ये एटम अपने आप जंप कर रहा है नीचे. सो सिंस इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट डजंट हैव द टर्म कॉल्ड क्यू. गॉट इट एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस spontaneous emission? Please respond immediately. We are also about to complete the third process before we leave the class. Yes, okay. So now next process we are going to see is stimulated emission. Okay. Now what is stimulated emission? When the atoms are in the excited state, okay, the photon is thrown upon the atom in the excited state. Now what will happen? This atom will become more unstable. It is already unstable. It has already absorbed one photon and it has gone to the excited state, so it is already unstable, and one more photon it is deliberately getting absorbed over here, so it becomes so unstable that forcefully it will be brought down to the ground state. So this forceful emission will liberate both the photons it has absorbed, and hence these two photons will come out, and these two photons will be exactly identical to each other. So they will be morely coherent photons, okay, specifically. And hence what will happen? This sort of radiation will emit coherent light, and that coherent light is nothing but laser. So if we get back to the previous term जहाँ पे हमने laser का acronym देखा था, let us go to the previous slides. सो ये लेज़र का एक्रोनिम याद है सबको? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. सो दैट इज laser is obtained by the process of stimulated emission of radiation.
सो वो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है ये वाली, ठीक है। सो अगर आपको लेजर चाहिए तो ये वाली प्रोसेस ज़्यादा होनी चाहिए. दिस प्रोसेस शुड बी मैक्सिमाइज टू प्रोड्यूस लेजर because we want coherent identical photons. Now how is the process? I will explain once again. Here again the atoms are initially considered in the excited state. तो ये absorption के बाद वाली ही process है. तो absorption के बाद emission होता है. emission दो तरह का हो सकता है, spontaneous emission, stimulated emission. तो stimulated emission what happens when these excited atoms are more bombarded with some extra energy photons. Okay, so what will happen, these atoms will become highly unstable because of absorption of now double energy, and they will emit this double energy out and they will jump down to the ground state. So again it's a downward jump, but this time two photons are emitted out, and these two photons are identical, so they are mostly called as coherent. You can see from this GIF, ये देखो दो जा रहे हैं, एक नीचे आ गया तो तीन हो गए, दूसरा नीचे आया तो चार हो गए, तो इस तरह से photons बढ़ते जाते हैं. So that is light amplification by stimulated emission of radiation. So we get more amplified, more intense light, and that is laser. Okay. अब इसका रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ए स्टार द एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट प्लस एच न्यू, उसके ऊपर फिर से एक और एच न्यू हमने डाला, गिव्स ए प्लस टू एच न्यू. तो वो नॉर्मल एटम ग्राउंड पे आ गया और दो एटम फोटोन उसने बाहर फेंके तो टू एच न्यू. ओके. अब डिपेंडेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स गोइंग फ्रॉम excited state to ground state means coming down from 2 to 1 by STEM means stimulated emission depends upon N2 कितने एटम्स हैं एक्साइटेड स्टेट में, Q क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व है, इट इज़ अ स्टिमुलेटेड प्रोसेस, सो Q इज इन्वॉल्व, सो इट डिपेंड्स अपॉन Q and delta T number of the amount of time for which the atoms are there in the excited state. तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और ये प्रोसेस बेसिकली लेज़र देता है. सो दिस प्रोसेस शुड बी मैक्सिमाइज टू प्रोड्यूस लेज़र. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द थ्री क्वांटम प्रोसेसेस. ओके, and which process is maximized to produce laser. So this is this process. Got it everyone? Have you understood all the three processes? समझ में आई तीनों प्रोसेस? Yes, respond immediately and tell me which process will give you laser, which process should occur more to get laser. Yes, yes, very good. Yeah. So stimulated emission will give you laser. Okay, so I will stop over here. Let me take your roll call and then only you will leave. Okay, I can see 60 students. So it is 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 is absent. 39 is not there, and 40 is also not there. Gaurav. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51 is not there. प्रत्युष अवस्थी ये बहुत एब्सेंट रहता है. 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 is not there. Okay, so 4 students are absent. Exactly 60 are there in the class. Any doubt in today's topic? Any doubt generally? और मैंने TA3 जो वहाँ पे फ्लोट किया है पोस्टर सबमिट करना शुरू करो सब लोग.
मुझे बहुत लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार कि पोस्टर में से एक टॉपिक लेना है क्या। टॉपिक लेना होता तो मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक नहीं देती, पोस्टर में वैसे बना के देती क्या। आपको वो चीज़ें वहाँ पे डालनी है जो पोस्टर के ऊपर लिखा है, समझा, along with the courtesy और source of the image, right everyone। so आज सबके पोस्टर्स अपलोड हो जाने चाहिए। यस, जिन्होंने सबमिट किया वेरी गुड। दूसरी चीज़, MIS में मार्क्स डाल दिए मैंने CAE 1 के, प्लीज़ चेक करो वही मार्क्स है कि नहीं जो गूगल क्लासरूम में दिख रहे हैं, ठीक है। और आज के आज इन्फॉर्म करो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ चलेगा, ग्रीन लाइट वाली ही इमेज है मानसी। टुलुक 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 आवाज है,